इंटरनेशनल अवार्ड, राइट, देश में एक ही होता है। थोड़ा सा जोरदार एक ताली के साथ, और हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, दैट इज आपको कंट्रीब्यूट करके हम काम छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप कुछ करते हो दो लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मेरे ख्याल से हमसे भी ज़्यादा खुशी होती है आपके पेरेंट्स को, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो इंस्टीट्यूट और फैकल्टीज को। सो आप लोगों से उम्मीदें हैं कि बहुत जल्दी जल्दी ये मोमेंट हमारे पास आता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको याद आए कि नहीं एक नेशनल अवार्ड मिला था, फिर एक दूसरा मिला, अभी 2 ही है अभी। So thankfully we are actually one of the few institutes, I guess, other than the Sarkari institutes, which have got 2. So this is the second that we have won. अभी तक हम लोग लेकिन शॉर्ट फिल्म्स में ही अटके हुए हैं। आप लोगों से फीचर लेंथ की भी उम्मीद है, खंजन से भी उम्मीद है नेक्स्ट फीचर लेंथ के लिए भी लेकर के आएंगे। So Khanjan has been, I guess it's been around 11 years since he finished his course in ZIMA. उस समय ZIMA दूसरी बड़ी कमाल की बिल्डिंग में हुआ करता था, आशिकी बंगलो, वहाँ से पढ़ के निकले थे ये। एंड सिंस देन ही हैज़ बीन वर्किंग ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली शॉर्ट फिल्म्स। जब आप इंडी फिल्म मेकर होते हो तो बिना सपोर्ट सिस्टम के अपनी तरह की फिल्में बनाने की कोशिश करते हो, अपनी आवाज़ सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो रास्ता थोड़ा सा हमारा मुश्किल हो जाता है। तो काम भी करना है, फिल्म भी बनाना है, क्योंकि पिक्चर के लिए पैसे भी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो काम करना, फिल्म बनाना साथ में। तो हालांकि अभी खंजन हमको थोड़ा और बताएंगे उसके बारे में, बट दैट जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। ही इज़ कॉन्स्टेंटली बी मेकिंग फिल्म्स। स्क्रिप्ट लैब में भेजते रहे अपनी स्क्रिप्ट्स, वहाँ पर अप्रूवल्स मिले, उसके लिए वहाँ से फंडिंग ली। इवन अदरवाइज भी ही इज़ गॉट अवार्ड्स। सिर्फ यही अवार्ड एक नहीं मिला है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं उनके, बट दिस इज़ दी लाइक द आइसिंग ऑन द केक। और यहाँ से अब हम उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स की उम्मीद भी करें। जो जर्नी होती है एक स्टूडेंट से निकल के फिल्में बनाना, और फिल्म बनाने से लेकर वहाँ एक्सेप्ट होना, कैसे आप काम करते हो, कैसे फंडिंग करते हो, हाउ डू यू नेटवर्क, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वर्क। एंड सबसे पहले फॉर्मल It's a nice time to be with faculty and students. साथ में मिलना बहुत अच्छी चीज होती है। He's really made us proud. I'll just say that. Yes, we are all proud of it. Yeah, we are all proud. One specific line I must say over here, that today we could see Dronacharya created Arjun. So he is Arjun, and we have got Dronacharya also available over here. And this is the only moment everybody मतलब ड्रीम एवरी डे, लाइक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। सिमिलरली इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी फैकल्टी प्रेजेंट ओवर हियर। दे वांट दैट उनके स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कर दिखाए कि हमको उनसे ज़्यादा प्राउड फील हो, एंड दिस इज दैट मोमेंट ही हैज गिवन इट टू अस। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
दूध के पैर पालने में नजर आते हैं। तो आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि इसको नेशनल अवार्ड मिला है, बिकॉज ये पहली फिल्म भी जो हमने देखी उसके अंदर उसकी एफर्ट दिखती है, सिंसेरिटी दिखती है, हाउ ही हैज यूज्ड ब्यूटीफुल म्यूजिक है। मतलब तभी से सेंस था ना, अभी तो हमने उसकी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म देखी नहीं है, सिर्फ इस पे ही बात कर रहे हैं। आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज बिफोर आई जॉइंड ZIMA ही वाज देयर, सो आई डोंट रिमेम्बर यू नो, बट पहला काम देख के मालूम पड़ रहा है यार दम है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। द यूज ऑफ हिज कैमरा एंगल्स, यू सॉ कपल ऑफ पोजीशंस आर सो ब्यूटीफुल। कहानी सिंपल है बट हाउ इट टचेज यू, दिल है कहानी में, इसीलिए दिल तक पहुंचती है। याद है ना मैंने बोला ना ये बात, फिल्म दिल से बनाओ वो दिल तक पहुंचेगी ही। सिर्फ टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो बात दिल तक नहीं पहुंचेगी, दिमाग से खत्म। इसमें दिल है यार फिल्म में, तो अब वो आगे उसको नेशनल अवार्ड मिला। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल ऑनेस्टली यार। 2010 and 11, I was in ZIMA. The place was at Ashiki Manglu. So whatever memory with ZIMA, it's all about in that particular place. So Vikrant sir is there, Sachin sir is also there. So I met these two guys there, and both they're supportive in all the ways, not only in filmmaking, in all the ways. And I'm very lucky to see both of them here still. And Tendon sir, I just saw him when I was in ZIMA, but it's very unfortunate for me that I couldn't attend his classes because I have to leave ZIMA. But today when I meet him, I have one teacher, his name was Nadim Khan sir. When I met Tendon sir, that reflection of Nadim Khan sir is, I'm getting the same reflection here. So you have watched two films now. Why I have shown the earlier film, though it was so unmature kind of work. I have shown this film to you. पहला दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मुझे ये होता है वो थोड़ा as a student जो बनाया मैंने उसमें थोड़ा कमियां हैं, लेकिन लास्ट फिल्म मैंने जो दिखाया आप लोगों को उसमें भी कमियां हैं, लेकिन वो थोड़ा कम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि फिल्म मेकिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस, एंड सर भी बोल रहे हैं कि सर इज स्टिल ए स्टूडेंट एंड हम भी स्टूडेंट है ही, क्योंकि फिल्म मेकिंग का ABCD हम लोगों ने सीखा नहीं है अभी तक, सिर्फ 2 लेटर शायद सीखा। But मैं कुछ बोलूँ यहाँ पर तुम्हारी इस बात पे। See, I don't agree with his line कि मेरे को वो पहली फिल्म दिखाने में थोड़ा हिचक, थोड़ा शर्म आ रहा है। नहीं खंजन, एक्चुअली में तुम्हें लग रहा है कि वो फिल्म में कुछ कमी है, मुझे तो लग रहा है उस फिल्म में कोई कमी नहीं है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर उस फिल्म में दिल है। और तुम इवन व्हेन यू वर अ स्टूडेंट यू कुड फील दैट फॉर अ ओल्ड मैन हाउ लोनली ही फील्स, एंड यू मेड अ फिल्म। आई डोंट थिंक हमारे को अपने पुराने काम पे शर्म आनी चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। बिकॉज पुराना काम पे हमें ये जरूर लगता है कि यार काश, जैसे तुम्हारी फिल्म का नाम है इफ, अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं ये वाला शॉट दोबारा लेके शायद शार्प फोकस में लेता तो क्या होता है यार, थोड़ा टेक्निकल फिनेस आ जाती। बट क्या उसमें दिल है?
और वो दिल हमारे को कम्युनिकेट हो गया, तुम्हारी वो फिल्म इक्वली गुड है अगर मेरे से पूछो। सच में मैं बोलता हूँ, ये बोलना बंद करो आपके ये मेरी पहली फिल्म है तो दिखाने में शर्म आती है। नो, वो गया यार टाइम। मैं तब ऐसा था, ये फिल्म बनाई, आज मैंने ये फिल्म बनाई, आज ऐसा हूँ। यू हैव टू enjoy every phase of your life. When you were a student, why not? And today when you are a filmmaker, why not? But don't disown your work. It is very important, yeah. It shows that you have grown. So don't ever say that you are embarrassed to, or you feel hesitant to show that. No, that is your growth. No, so no. I mean, sorry, मैंने आपको interfere करा, but this is my reaction. You should never say that. The story, the second story, we'll talk about the second story or the second film which you made, sir. Basically, the story or the kid I can relate the way or the speaking. I think from you are from that region. Yeah. So basically, you have portrayed that region very beautifully. First of all, very sweet and a simple lifestyle. But more than that, I want to ask you. Does that story is related to your life, or have you seen it or heard it somewhere? I spent my childhood in that place. It's probably the end of the 20th century. What happened in Northeast earlier? It's a disturbance area basically in that time. So a lot of local extremist groups were there in that time. So they used to roam everywhere with the gun, and they charge money. They just try to catch anyone. If they want to kill anyone, it's an easy job for them. So I have seen these things there, and it was in my subconscious mind all the way. So after completing my school, I came to a small town where I did my higher secondary. After that, I came to Guwahati. After that, Bombay. So but always those things are my subconscious mind. Now also, whatever I am just making, if I'm writing a feature film script, that's small elements from my childhood. It's always there. I think it happens to everyone. That childhood memories, it's always in our subconscious mind. Whatever we are here, it was always there. So in this film, though this is not the real stories, but the element of these films, those are the real. Comes from your surroundings. Yeah. Actually, before joining ZIMA, probably in 2006, I made my first short film. I just completed my higher secondary course, and during my break time, I joined a cinematography course, small cinematography course. It was not at all cinematography. They are just coming with a handycam camera, and they are just teaching how to take a shot. So the fees was around 20,000 in that time. Okay. So it was a huge fees. So I asked my parents to give the fees. They eventually gave me the fees. But I didn't give it to that guy who is teaching us. Instead of that, what I did a short film with this money by myself. And that was my first short film, and that was like a school for me. My short film, I'm not showing it here. But in 2006, I made my first short film. After that, I did my bachelor degree in business communication. But during that time, I was exposed to world cinema. We have a small cine club in my Guwahati. So I used to go every Saturday to see some world films. So I was exposed a lot. It's like I have watched around 200 to 300 world cinemas there. So I eventually I just gathered the knowledge of the cinema, sense of the cinema, basically in world cinema. So ZIMA doesn't have that camera, no? So we have a different kind of small Panasonic camera. I think we have Sony. So one of my senior, he recently brought a Canon camera. So basically, institute doesn't allow us to shoot with other cameras, but चुपके से मैंने मतलब ये वो कैमरा से शूट किया. So when I came to Sachin sir even didn't tell to our HOD that he is using some different cameras. So editing में आके हम लोगों ने उसमें ये फिल्म किया था. ऐसे जर्नी शुरू हुआ था. अभी तक ये मेरा लास्ट शॉर्ट फिल्म था. एक्चुअली इन बिटवीन दैट मैंने फीचर फिल्म भी शुरू किया. 2014 में मेरा पहला फीचर फिल्म मैंने बनाया था. So I'm in Mumbai just to do the post production of my second feature. Hopefully I'm going to release this feature in next year.
that's the journey. Best wishes for that. Thank you. I think it's very easy to get a work, and I have seen that the technical people, basically is cinematographers, sound designers, editors, for them it's very easy to get a job, and I think for the other sections like the direction and writing, it's a little bit difficult, but it's not impossible. But if you have a good content, I think you will definitely get one of the chance. How did you communicate them the story, and how could you, I mean, help them with understanding the characters, because both the performances were really strong. And For this film, both the movies. working with child and working with animal is both the same. So आप लोगों ने मतलब कभी एनिमल के साथ भी काम करोगे तो वही फीलिंग होगा, क्योंकि you cannot force them to act. You need to just capture their reactions. And acting is what? It's just all about reactions. So I didn't I didn't organize any kind of workshop. I just picked up the characters. And मुझे ये believe है कि मतलब actors को सिखाना नहीं है. So मेरा पास जो script है मैं उसको सुनाता हूँ, और उन लोगों का जो मतलब reactions है वो मेरे लिए बहुत मतलब important. So in these films I narrate the stories to the children also. So in the shooting moment, I just narrate them the situation, and most of the time they eventually come up with the dialogues, and they are so brilliant. In some cases, when I went for dubbing, within a short period of time they are able to deliver their dialogues. वो बेसिकली जो एडल्ट एक्टर्स हैं उन लोगों से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है चाइल्ड चिल्ड्रन. सो इट्स डिपेंड अपॉन हाउ you just communicate with the children. It varies film by film actually. In your second film, the recent one, when the child asked his father why the man was shot in that market, the reaction after that was superb. It's a very raw kind of thing. Yeah, it was very super. Use of music in the second film. I don't use music. Yeah. Basically, Why? For me, if your sound design is brilliant, there is no scope for music. So in my second film, sound is my music. Even I developed that sense by watching a lot of other films in other industries, not only in Bollywood. If you watch a film from Vietnam, you will feel the sense how actually South Asian countries are trying to portray a particular story without using music. So music is important. It's not that you should not use music. Music is important to just gear up the flow of the story. But in this film, I feel sound is more important than the music, because the surroundings you have seen, there are a lot of birds, the waterfalls, everything. So these are kind of music. Even in my second film, which I am working right now, I am not using a piece of single music here, because sound is so powerful for me. So it just works as a music. बहुत अच्छा वो म्यूजिक पीस है. हाँ. तो उसके बारे में कुछ बताओ. नाउ दैट यू आर सेइंग यू डोंट वांट टू यूज म्यूजिक बिकॉज़ साउंड इज योर. अभी भी मुझे लगता है वो फिल्म में अभी फिर से बनाऊंगा तो शायद उधर म्यूजिक ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि the ambience in Mumbai, because I shooted this film in Warsaw and Yarilo. Because see, in big cities, what you have is more of chaos, traffic noise, cheek, chap, and what he's saying is really deep. That if you use the sound well, then you don't need the music. It's just silence is very important, and sometimes sound. But how you just use these things, it's depend on you. But I have seen a lot of films that the entire film is covered from beginning to end. It's only music. So it will draw your attention for a short period of time. But from cinematic point of view, I think it will not last for a longer period. That's it. So your second feature that you are making, उसमें गाना भी नहीं है? नहीं. वो it's around 104 minutes film. So it's a one day kind of story. The name of the film is A Midday Without a Name. A midday. Yeah, A Midday Without a Name. It's a story about a couple who is looking for a hotel room to spend some intimate time together. So it's their journey to enter. It's a day what they enter.
Interesting subject already. Yeah? One line कितनी interesting है. Actually, in third world country, sex is a taboo for us. So actually, and my perspective is that in my film, we have a Saraswati Puja in the backdrop of the film. We worship a lifeless goddess, but in real sense, how we actually exploit women. Unusual and quite like it's very different because there are some formulas set in every industry that there should be songs. Now they are changing, but there should be songs. Okay? If not in the film, but there should be a promotional song to promote the film. And you are totally opposite of Self is a language of communication. यही बात हम लोग. Yes. जब मतलब spoken language में जाएंगे, it will lost its own essence. और ये जो language है ये मुझे भी नहीं पता और ये मेरे लिए beneficial हुआ इसलिए क्योंकि मैंने visuals में ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हो लोग मतलब झूठ बोल रहे हैं या मतलब तो वो कौन सा लैंग्वेज था? it's called Karbi. हाँ मैं वही सोच रहा था कि असमीज अगर वो बोल रहा है तो असमीज इज लिटिल सिमिलर टू ओडिया. ओके मुझे थोड़ा सा समझ में आता है बिकॉज आई कम फ्रॉम ओडिशा तो मुझे लगा कि वो समथिंग सिमिलर टू ओडिया होगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. आई वाज वंडरिंग सिंगल वर्ड ऑफ व्हाटएवर दे आर सेइंग तो फिर ये इसलिए मैंने बोला कि ये बेनिफिशियल हो मेरे लिए क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं पता है लेकिन इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया विजुअल्स में इसलिए मेरे लिए वो बेनिफिशियल है. लेकिन एक डर नहीं रहा कि अगर वो गलत बोल रहे हैं और हम जो अभी सबटाइटल डालेंगे वो दोनों अलग रहे और जिसको समझ में आ रहा है उसको वो मिस कर सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. सो इसलिए मैंने एक ट्रांसलेटर भी था मेरे साथ जिसने मतलब वो प्रॉपर ट्रांसलेशन वगैरह किया था. व्हाट इज द टाइम फ्रेम इट टुक लाइक फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन? Basically, independent film always takes a lot of time. These films take around probably 1 year, 1.5 years. Yeah, because my producer was from Ladakh. He invested for the production. Then I have to wait for another 6 months to complete the post productions because post production it needs more money than the production. So somehow I got an award in Assam and they just give me cash prize. So with this cash prize I completed the post production of the film. Story is not at all important. It's all about narrative. I have seen a film called The Turin Horse, a German filmmaker named Bela Tarr. The name of the film is The Turin Horse. If you get chance, watch this film. This film has only 21 shots. It's a 3-hour film. 21 shots. There is no dialogue. There is dialogue in the middle of the film. Only one character speaks around 10 minutes. After that, there is no dialogues. It's a black and white film which is made in 2019. I think it will be nice if you can some other day before you go back this time, or even if you don't have time this time, next time when you are in Mumbai, I mean, you spend a day with our students as a chunk, so we'll arrange. Yes. Sir, we'll arrange that all the students ZIMA Zika के साथ में they are free on that particular day when you come, and then you can talk more at leisure and pleasure, Okay. so that everybody gains, because आज क्या है, film making सिर्फ film grammar नहीं रह गया है, as he rightly said, कि भाई उसको different festivals के साथ में coordinate करके funding भी बहुत important हो गया. So I think he can give you more insight into filmmaking overall. So that will be a nice thing if you agree to that. Definitely, I'd love to be here. Sir, we would love to have you there. Definitely. Love to. So next time when you are coming, just inform us in advance, and you must spend a day with us. I think हम लोग का और एक प्रॉब्लम है. जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में था, हम लोगों की स्टोरी दिमाग में है, पेपर में नहीं होता. वो भाई शायद अभी भी है कि नहीं पता नहीं. बहुत सारे मतलब फिल्म मेकर्स का बढ़ रहा है. और बहुत प्रॉब्लम है. और हम लोग तो थोड़ी ना मतलब पहला टार्ट है कि हम लोग का मतलब सारा दिमाग में है. इट शुड बी इन राइटिंग. वो काम के लिए हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, खुद का दिमाग चाहिए और खुद का मतलब एक पेन और पेपर चाहिए और खुद लिख सकते हैं. उसके लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए. अदरवाइज फिल्म मेकिंग सिनेमा इज ए वेरी अनहैप्पी आर्ट. ओके, इट्स वेरी अनहैप्पी आर्ट. राइटिंग ही ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ
you don't need to spend a single penny. So just try to write. You know about Kurosawa? You know Kurosawa? Yeah. Kurosawa told that 3 elements are the most important in cinema. First one is the script, second one is script, and third one is script. So a master of cinema, if he elaborate these things in that way, then हम लोग क्या है भाई? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखो. मैंने जो अभी फिल्म कर रहा था 2006 से मैंने लिख ही रहा हूँ, अभी जाके खत्म हुआ मेरा. उसका अराउंड 10 ड्राफ्ट हो गया जो एशिया पैसिफिक में था. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम फिल्म मेकिंग. सो वो हम लोग कर सकते हैं. और जो हम लोगों ने नया नया जो कंटेंट हम लोग के दिमाग में आते हैं उसको जितना हो सके पेपर में उसको लिखना जरूरी है. ऐसा नहीं पेपर में, यू कैन just use your softwares and all to write it down. Just to Thank you for this. We'll be in touch with you. Yeah, definitely. So that we can invite you one more day, how sir was saying. Yeah. So please spend it a day time with our students and educate them and These are share not my your students, these are my juniors. yeah, That's a Yeah, better share your relationship to be in. We definitely love to. Thank you. Thank you. अमियत की सिंप्लिसिटी जो है ना, वही उसका सबसे पावरफुल हथियार है. मैं बता रहा हूँ, मेरे को जो आज मिलके लगा उसकी सिंप्लिसिटी इज ग्रेट. Sir, in clarity. वही जहाँ सिंप्लिसिटी होती है ना सर, वहाँ क्लैरिटी होती ही है. हम कॉम्प्लिकेट करते हैं ना जब चीजों को, तभी हम खो जाते हैं. दैट्स सिंपलनेस. एंड व्हाट ही सेड, यू नो, अबाउट साउंड, you know, being his music, I think it makes a lot of sense. Really.